School, stand at ease. School, attention. School will salute the flag, salute. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। একত্র হয়েছি আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা উদযাপন করবে। সেন্ট পলস একাডেমি তে জশ্ন আজাদি 1947 সালে 15ই আগস্ট দীর্ঘ সংগ্রাম, অসংখ্য শহীদের ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের স্বাধীনতা। শুরু করি আজকের দিনটি আমরা দেশের প্রতি প্রেম, কৃতজ্ঞতা ও গর্বে আবেগে ঘুরিয়ে তুলি। Today, our performances are not just entertainment. They are heartfelt tributes to the heroes of our past, the protectors of our present, and the builders of our future. We begin with a solemn salute to our martyrs. Burn the eternal flame, the Amar Jawan Jyoti. It is a silent sentinel standing guard over the memories of our brave soldiers who laid down their lives so that we can enjoy freedom. The black marble pedestal crowned by a soldier's rifle and a helmet speaks without words, telling us the valor, the sacrifice and unshakable duty. आज हम एक ऐसे पवित्र स्मारक की नमन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं जो भारत माँ की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सूरवीरों के साहस और बलिदान का अमीन प्रतीक है। अमर जवान ज्योति। Today we celebrate the 79th Independence Day. Let us pause to salute not just the flame but the countless lives it represents. May I please call forward a respected Chairman Sir, respected Secretary Sir and respected Principal Sir to come forward for the honors. Sir, we will have the Amar Jawan Jyoti. We all welcome all the dignitaries. Dear Pauline, maintain silence.
ट्रम्पेट ट्रम्पेट। नई दिल्ली के इंडिया गेट के नीचे जलने वाली ये ज्योति 1971 में भारत पाक युद्ध के शहीदों की याद में प्रज्वलित की गई थी। तब से लेके आज तक यह अखंड ज्योति हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा देशभक्त अपने देश के लिए जीना ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर देश के लिए मरना भी जानते हैं। यह ज्योति हमें उन वीर सपूतों को याद दिलाती है जिनकी आंखों में देश का सपना था, जिनके दिल में केवल मातृभूमि की रक्षा का संकल्प था और जिनके लहू ने इस मिट्टी की और भी पावन बना दिया। वो माटी का कंठन बोले शौर्य वीरता बलिदान की कथा हम भूल न पाएंगे उनकी कहानी। जब तक सांस है जब तक यह धरती और ये आकाश। अमर जवान ज्योति केवल एक स्मारक नहीं, यह हर भारतीय के हृदय में जलती हुई वो लौ है जो हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं या शूरवीरों की रक्त से सींची गई है। आज हम इस अमर जवान ज्योति के सम्मुख खड़े होकर हम सभी उस वचन को दोहराए कि हम अपने देश की रक्षा सम्मान और गौरव के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और शहीदों के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आइए इस पावन क्षण में हम अपना सिर झुकाकर हृदय में कृतज्ञता का दीप जलाकर और होठों पर एक प्राण लेकर इन अमर वीरों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत तेरे नाम रहेगा। The Amar Jawan Jyoti, the eternal flame, burns day and night as a silent guardian to our gratitude. It honors the soldiers who gave their today for our tomorrow. Our gratitude for all the martyrs. Freedom, they say, is not given. It is won. It is carved out of sacrifice, courage, and a vision for a better tomorrow. The story of India is of one. Unity in diversity, of dreams that refuse to die. Music is the language of the soul, and the voices unite in harmony. They carry the message that words cannot deliver. We call forward the school choir to present their rendition of Tiranga. Let's welcome our school choir.
not just earth, but the dust of sacrifice. Bharat, where the sky is painted with dreams of a billion souls. Bharat, where every drop of blood has the word freedom. And Bharat will live forever because Bharat is in us. We present next a Bharat Natyam performance titled Bharat by our talented Standard 7 students. Through graceful movements, they depict the timeless glory of our nation. भारत जिनकी मिट्टी में खुशबू है, भारत जिनकी मिट्टी में खुशबू है बलिदान की, संस्कृति है अपनत्व की। भारत केवल एक देश नहीं, यह राग, ताल और लय से बनी एक आनंद कथा है। पेश है सारंग के स्वर द्वारा ओपनिंग क्लासिकल डांस भारत। টাইপটা টানতে হবে ওই देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत से देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार, देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले, भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, भारत ये रहना
Nine, you are the soil beneath our feet and the sky above our heads. Your tears have watered the fields of our freedom. Your embrace is the shield that guards our every tomorrow. Nine, we live because you never stopped loving us. A mother's love for her child is limitless, just like the love of our motherland for her children. Mine, performed by the students of 5 and 6, brings forward this book. भारत के इतिहास में कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन्हें पढ़ते समय आंखें भर आती हैं, और ऐसा ही एक पन्ना है 13 अप्रैल 1919 जालियनवाला बाग का वो दिन, जब निहत्या मासूम लोग देशभक्त की भावना के साथ एकत्र हुए थे, लेकिन गोलियों के बछार में अपनी जान गंवा देते हैं। उन शहीदों में कई ऐसे भी थे जिनकी माएं आज तक अपने लाल को एक झलक को तरसती है। उनकी ममता, उनका दर्द और उनका बलिदान, यही कहानी हमारी स्टैंडर्ड 5 और 6 के स्टूडेंट्स अपने नृत्य के माध्यम से कहेंगे। So let's welcome the students on the stage.
performance. Students, I hope you are enjoying. Yes or no? That was a very loud response. Can we see once again? Are you enjoying? Wow. We are all super energized. Thank you. ভারত ভারত শুধু সাহসী সৈনিকদের জন্য নয়, বরং সেই কন্যাদের জন্য গর্বিত যারা প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ দিয়েছে। তাদের দৃঢ়তা, ত্যাগ আর অনুপ্রেরণার কাহিনী আজ আমরা এই নাচের মাধ্যমে দেখব। ভারত কি বেটি। She is courage. She is grace. She is the voice of New Dawn. The daughters of India have always stood as pillars of courage, wisdom, and strength. This classical piece, Bharat Ki Beti, performed by Standard 6, is going to be a celebration of this event. Calling forward the Let's welcome the students on the stage.
Check. There are places in our country where the wind carries the scent of pine trees, where rivers line like silver threads through the valleys, where mountains cradle the dreams of 1,000 generations. One such place is Pahalgam, a jewel of Kashmir, a land of beauty and courage. On April 22nd, 2025, Pahalgam bled. 26 innocent lives were stolen in cold blood. But on May 7th, 2025, India responded. India responded not with anger, but with precision and justice. India struck back with Operation Sindoor. Our next act depicts this performance. অপারেশন সিন্দুর, সাহস, ত্যাগ ও ভালোবাসার অমর কাহিনী, যেখানে আমাদের বীর সৈনিকরা প্রাণের বিনিময়ে দেশের সীমানা রক্ষা করেছে। এটা শুধু সামরিক অভিযান নয়, বরং সেই সমস্ত মা, বোন ও স্ত্রীর জন্য গর্বের মুহূর্ত, যাদের কপালের সিঁদুর এই বীরদের ত্যাগে সুরক্ষিত ছিল। আজ স্ট্যান্ডার্ড 3 এবং 4-এর ছোট্ট শিল্পীরা সেই শর্তের গল্প নৃত্যের মধ্যে জীবন্ত করে তুলবেন। উপস্থাপনা সিঁদুর। Before we start the program, this dance program, we'd like to call our respected Secretary Sir on the stage. Let's welcome Secretary Sir. Dear Polite, let's welcome our Sir. Let's give a huge round of applause. Hello students, Polite are you here? Okay, I see that everyone is busy gossiping. Are you not enjoying the program? Enjoying, yes or no? আরো জোরে একটু। এবার মনে হচ্ছে কি সেন্ট পলসে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে। So wishing all our Carolines, our students, our lovely students, a very very happy Independence Day. You say with me, happy Independence Day. Once again, happy. Once again, happy. So there is not only enjoying the Independence Day program, we have all the soldiers at our Indian borders everywhere you can see. And there is any chance of any type breaking up of war between India and Pakistan or any other country. So are you ready? Are we ready for this freedom of our India, to maintain the freedom of our India? If required, you are ready to go at the border to fight back? I want your hands up if you are ready or not. Very good. I can see a very good energy among our students, our lives. So it's very good that you enjoy our program on the eve of the 79th Independence Day. On the eve of Independence Day, I wish my best luck and best wishes to all our students of Pauline, a very happy Independence Day. Best wishes to all our teachers and staff members, the maintenance staff, aunties and everyone, the drivers and helpers. Wishing you all a very happy Independence Day.
अब सबको मिलकर एक बार जोर से बोलेंगे, वंदे मातरम। I can't hear. Louder. मेरे साथ बोलो, वंदे मातरम। और जोर से, वंदे मातरम। जय हिंद। Thank you, students. Thank you. नहीं बिकने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना। मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना, बहनों बहनों कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना, बहनों ने फिर पहला कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। Words have the power to inspire revolutions. We now invite Enakshi Goswami and Devariya Shah of Standard 4 to recite a stirring piece dedicated to Netaji Subhash Chandra Bose, a man whose life is a beacon of freedom. কবিতা শুধু শব্দের সমষ্টি নয়, এটি অনুভূতির প্রকাশ যা হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। কণ্ঠে সেই দেশপ্রেমের আবেগ, আর এই ছোট্ট খুদে আমাদের শোনাবেন। Let's welcome Enakshi Goswami and Devariya Shah of Standard 4. উপস্থাপনা কবিতা আবৃত্তি। Good morning
respected chairman sir, secretary sir, principal sir, vice principal sir, vice principal ma'am, discipline coordinator ma'am, and all my dear teachers and friends. I, Enakshi Goswami, and I, Devariya Sir, and today we are going to present a recitation. আমি সুভাষ বলছি, written by শুভ দাশগুপ্ত। তোমারে পাথরে দিয়েছি মালা, এত মালা, এত ফুল, তুমি ঢাকা পড়ে গেছো। তুমি পাথর না হলে রাগ করতে 56 বছর আগের এক মধ্যরাতে একদিনের 3 তলার ঘরে আলো জ্বলছিল। চাদর গায়ে এক ছায়া মূর্তি পায়চারি করছিল অবিরাম। বাইরের রাস্তায় ইংরেজ পুলিশের চর সতর্ক সজাগ চোখে দেখছিল। তার সব সতর্কতাকে বন্ধু বানিয়ে তুমি তখন অন্ধকার ছেড়ে ছুটে চলেছ আলোর পথে। দেশের মানুষ কাপড়ি কেউ টের পায়নি। তুমি চলে যাওয়ার পর 56টা শীত বর্ষা গ্রীষ্ম উধাও। তুমি সেই থেকে প্রত্যেক জানুয়ারিতে পৃথিবীর পাড়াও পাড়াও সব মাটিতে তোমার অনস্বর পায়ের ছাপ। সব রাইফেলে তোমার বুকের বারুদ, সব কুচকাওয়াজে তোমার সেনার ছন্দ করো। পাথরের মতন স্বাধীনতাকে খুঁজেছে তোমার অন্তরে লুকিয়ে থাকা খ্যাপা। তোমার গন্তব্য ছিল স্বাধীনতা, তোমার পথ ছিল স্বাধীনতা, তোমার স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা, তোমার প্রেম ছিল স্বাধীনতা। তুমি রক্ত চেয়েছিলে স্বাধীনতার জন্য, তুমি চাই পাথর যা স্বাধীনতার আড়ালে চেয়েছিলে গতি, চেয়েছিলে সিংহাসন। ইংরেজদের ছেড়ে যাওয়ার লোকের রাজ্য পাতে তারা রইল সুখে। ভারতবর্ষের টাকায় তাদের মুখ তোমার নয়, ভারতবর্ষের অফিসে আদালতে তাদের ছবি তোমার নয়, ভারতবর্ষের সংবিধানে তাদের বৈঠক তোমার নয়। ইংরেজ গরিব মানুষকে পায়ের নিচে রাখতো, আমরা বড় লোকদের মাথায় করে রেখেছি। স্মাগলার কিংবা ডাকাতকে জোর হাতে সভাপতির আসনে আহ্বান করেছি। ইংরেজের ধন সম্পত্তি লুট করতো, আমরা দেশটাকে বেঁচে দিচ্ছি। ইংরেজ দিয়েছে চাবুক লাঠি গুলি, আমরা দিয়েছি মস্তার মাফিয়া নেতার গুলি। ইংরেজ দিয়েছে কালাপনি খেলোয়াড়দের, আমরা দিয়েছি টিভিতে সুপারহিট মোকাবিলা। আর আইনসভায় আর গয়া মেখে 56 বছর আগের এক মধ্যরাতে পড়াশুনি দেশ ছেড়ে তুমি চলে গিয়েছিলে স্বাধীন এক স্বদেশে ফিরে আসার স্বপ্ন। তুমি ফিরে আসনি, স্বাধীনতা এসেছে, তার কাঁধে ঝুলি ভরে নিয়ে এসেছে ভোট নামক লাঠি। গণতন্ত্র নামক চিরায়ত মাত্র নাই, প্রকৃতি নামক উত্তম স্ট্যাটিস্টিক্স, প্রকৃতি নামক বিস্ফোরণের চুরমার, ঐতিহ্য নামক মন্দির মসজিদের ঝগড়া, আর সমুদ্রের জীবনটা ভরিয়ে দেওয়া ভাষণ শাসন আর ভাষণ। 56 বছর ধরে তুমি পাথর হয়ে আছো, 56 বছর ধরে ভারতবর্ষ অধীর অপেক্ষায় প্রাণ বেঁধে আছে। গীতার তরঙ্গে হয়ে আসতে দাঁড়াবে স্বাধীনতার নিজস্ব কণ্ঠস্বর। আমি সুভাষ বলছি, আমি সুভাষ বলছি। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। জয় হিন্দ। Colleagues, where are the claps? I didn't hear the claps. Come on, put your hands together. That was a lovely performance. Thank you, Enakshi and Devariya. That was indeed very soulful. Shadeen হবে দেশ, our land will be free. This is the dream that every Indian once carried
in their hearts. Shahin Havedesh captures that dream in the form of a traditional dance going to be presented by the standard 5 students. যত বাধা আসুক, যত অন্ধকার নামুক, যত বাধা আসুক, যত অন্ধকার নামুক, আলো ফুটবে, কারণ স্বাধীন হবেই দেশ। স্যারের 5-এর ছাত্রছাত্রীদের উপস্থাপনা, স্বাধীন হবে দেশ। বাহ, খুব অসাধারণ নৃত্য। মা, তোর গায়ের গন্ধে ভরে প্রাণ, শস্য শ্যামলা তোর রূপের গান, রক্তে মিশে আছে তোরই নাম। বন্দে বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম শুধু একটি গান নয়, মাতৃভূমির প্রতি চিরন্তন প্রণাম। স্ট্যান্ডার্ড 8, 9 এবং 11-এর আজ এই নৃত্যের মাধ্যমে সেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্পণ করবে। And now, the song that has been the heartbeat of our freedom struggle, the hymn that served millions to rise against oppression and say, Vande Mataram! These 2 words mean more than just, I bow to thee, my mother. They carry the fragrance of our soil, the strength of our mountains, and the unbreakable spirit of our people. Let us rise with every note. Let our voices say, Vande! Calling forward the participants.
was a very graceful performance by our dear students. Isn't it? Yes or no? Little bit louder. Put your hands together. Cry a bit louder. Let me see the cry come up. Yes. That is how it should look. After every performance, you would like to see this. Thank you. जब तिरंगा लहराए तिरंगा आसमान में, जब गूंजे देशभक्ति की गीत चारों ओर, तब दिल से एक ही आवाज आती है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। स्टूडेंट 7 और 8 के स्टूडेंट लेकर आए हैं वही जोश, वही जज्बा, नृत्य के लिए और देशभक्ति तिरंगों में रंगा एक डांस। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। न पूछो जमाने से हमारी कहानी, न पूछो जमाने से हमारी कहानी, हमारी पहचान तो यही है, सिर्फ हम हैं हिंदुस्तानी। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। Nothing wealth more in power, but in courage and in strength and unity. Because every Hindustani stands tall and leads from the front, calling forward the standards 7 and 8 for their energetic performance. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम जाते कबते नहीं। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम जाते कबते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। जोश है और जान है, नाच के ना मिटे देश को अपनी शान है। उम्र है, जोश है और जान है, नाच के ना मिटे देश को अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे Our next presentation is more than just a song. It is a call from the heart of
soldier who longs to see the Tiranga fly high. Lehrado echoes with the songs of courage, all to the front lines warriors who never bow. As we listen, we remember this flag does not wave in the wind alone. This flag waves because of breath, blood, and the bravery of our protectors. Lehrado, our next performance. लहरा दो, लहरा दो ताकि तिरंगा की हर लहर में हमारी आजादी, हमारी साहस और हमारे गर्व की कहानी गूंजती है। Next performance, Standard 3 and 4 students are coming up with Lehrado performance. ಶೂಟ್ ಕೊಡಲೇವಿ ನಾಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು Hello. Lovely performance, isn't it? How was that? Good. Yes. Okay. भारत, भारत जहाँ भाषाएं बदलती है,
की धड़कन एक रहती है। जहाँ रंग रूप बोली अलग है पर सुर एक है। स्टैंडर्ड 9 एंड 11 के स्टूडेंट्स लेकर आए हैं वही अनमोल धुन जो पूरा देश को एक ही सुर में बांध देती है। मिले सुर तुम्हारा मेरा। And now, a song that weaves together many colors, languages, and cultures. Our incredible India. Mile Sur Mera Tumhara is not just music. It is a promise of unity. From the snowy heights of Kashmir to the sandy shores of Kanyakumari. From the fields of Punjab to the tea gardens of Assam, our soul, our tune blends into one. To conclude our program, we present Mile Sur Mera Tumhara by Standard 9 and 11 students, calling them forward. Let's welcome the students. अच्छा सुनो चलो
and for one last time, you see us on stage. Before the music stops, the stage becomes free. Here's wishing everyone here a very, very happy 79th Independence Day. Before we conclude, let's once again put our voices together and say, Jai, Jai, Vande, Vande. To conclude, we have a vote of thanks, and I call forward our Honorable Principal Sir. Sir. Let's welcome sir on the stage, beautiful lives. Give a huge round of Put your applause. hands together. Yes, children. So, first of all, I wish you a happy Independence Day. And as the entire nation is enjoying today with the pride, we also a part of the nation and we are enjoying too. And we have proved that we are also in the best position as one of the best schools in India. We observe the program is excellent and all the participants they have placed their performance very well, but little bit children. Today I will not speak too much because as already you have enjoyed. Just few things just I like to say you that after a lot struggle, the people who brought the independence, they lost their life, they lost their family, they left everything, they sacrificed everything. And for what today we are enjoying. So we salute all of them, those who have for whom we are enjoying today this, observing this Independence Day. But children, I'm not going to history, but one thing I want to remind you. How was this date 15th August was decided? And who decided this 15th August? Why not in any other day? Who declared this, who decided that India will get freedom on 15th August? Children, you see, on 18th of July 1947, British Parliament passed a bill that they have to hand over our country in our hand. And they appointed the Mountbatten as Viceroy. So the Lord Mountbatten was the Viceroy at the time of our independence. See, he only decided the date will be 15th of August. Why Lord Mountbatten decided this date will be 15th August, not any other date? And from where? From 18th of July, British Parliament gave him order to try to hand over the nation to their people. But why did they decide? Lord Mountbatten, he was the Viceroy at the time of independence. Before that, he took part as Chief of Admiral in the Asia part. From the Asia side, as a Chief of Admiral, he was the army head,
and that time they defeated the Japan in World War II. And World War II, Japan army surrendered him on 15th of August. So it was a great day for him as he was the admiral, a great joy day for him. So Lord Mountbatten, he decided, let this date be declared, and on this day the power will be handed up. So accordingly, they decided the 15th August as the day of independence. Children, after independence, simply not that we'll enjoy, but we have to safeguard our country, we have to bring our country to the position we have made target that by 2027, when the 100th Independence Day will be observed, we should be one of the best country in the world. So we are trying our level, we have achieved a lot, we have stepped into the moon, we have shown our medical facility that the best medical facility by fighting against the COVID. We have reached the moon, and in many places, and recently in this our Operation Sindoor, we have placed ourselves, and the entire nation know that India is not a weak country. And with this, although we achieve a lot, but still there we have lot of things to achieve. Children, we are developing in artificial intelligence and other parts where now space is for you to come forward, you study well and join the nation to get to the best country by 1947. Now children, let me conclude this part by thanking to the one and all. First of all, I thank our honorable management, chairman sir and secretary sir. They have given us permission to arrange this program. Children, next is our dance and music teachers. They have proved themselves as the best groups, and they have given the sufficient idea, and for which we had a nice program today. Besides this, all other teachers supported well. Students, you prepared well. Last few days, you prepared in such a way that you produced such an excellent program. We didn't believe, but we got it an excellent program. Then our associate teachers, non-teaching staff, they had a great role. They have made it colorful, for which we are sitting and enjoying today this program. So I thank one and all, and lastly also to our parents and to the regulars of our schools. They accepted our invitation, they came here. We also thank them. So by thanking to one and all the stakeholders back of this program, we conclude today's program. Thank you all children. Now it is time for you to leave the place, but be in your place. I request the teachers to come to the stage and control the matter. Everyone concerned who have directly or indirectly was involved with this program, all the teachers, the management of course, the teachers, the assistant teachers, the maintenance staff, everyone who have made this complete program a grand success. Thank you so much. A loud round of applause for everyone present here. Once again, put your hands together please and thank everyone.
जय हिंद, वंदे मातरम।